Say my favorite Nagin on screen has been say Tejasvi Prakash. I love the way she has whatever done. You have seen her work in Nagin? I've not really seen Nagin. Teju and me are friends. So अब शो आने वाला है. उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती. उसके बाद अगर मुझे ऑडियंस बोलेगी, अगर वो मुझे कंपेयर करेगी नागिन के साथ, there's this term that I use. It's called FLCM. I can't really say the word. You can. It's called. मेरे दोस्तों, when I talk about performing artists, हर एक के अंदर एक शेर या शेरनी होती है, लेकिन ये सिर्फ performing artist की वजह से शेरनी नहीं है. She has always been a शेरनी in real life right from the very young age. I have with me the lovely Aneri. Thank you so much for joining me. आप अकेले हो, आप ताली बजाओ जोर से Aneri के लिए. You have to clap. You have to compensate for everybody who's not there in this room. Tell me something. I spoke about the fact that you have been a tigress even before turning a tigress on screen, and the reason I say that is because of a lot of things. Like मैं सुन रहा था वहाँ पे, like the first gift that you ever gave to your mom, से लेके cars वगैरह etc. You started very young, and जिस टाइम पे शायद लोग खेलते कूदते वगैरह, you decided कि नहीं यार, I want to damn focus on life and actually start doing things. वो डे से लेके अब तक it's actually been a journey of a tigress that way as well. Do you see that way as well? Yeah, absolutely. Now that you've put it into such a, like you've said it very nicely. और जब Bagin आया भी and people got to know that I'm the tigress, I got a lot of messages saying the same thing that मैंने तुमको मैसेज किया था. Yes. You have also messaged me. My family has messaged me. A lot of my friends from the industry has messaged me कि tigress तो तू अब बनी है इस शो में, but you've always been a tigress, and I was like, सोच रही हो. thank you. Yeah. It was like a pat on my back, so it was very sweet. Thank you. But I think you're doing a lot for your fitness as well, diet वगैरह के लेके. It shows on your personality as well. Now, what are the things that you're doing? Nothing. I've just been religiously working out these days, and I'm eating healthy. And हाँ, मतलब कुछ मोटा पतला नहीं होता. It's just about you have to be fit, and वो fit आपको किस तरीके से रहना है वो आप खुद decide कर सकते हो. So yeah, it's a journey that I am on right now. मुझे बताओ, whenever it comes to supernatural fantasies like this ना, मजा आता है. Either it will be like really really entertaining, या फिर लोग सोचेंगे कि यार ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया. For an artist, it's a situation of dilemma because you have to be completely convinced about what you're doing. At the same time, कभी-कभी self doubts भी आते हैं because you're a human being at the end of the day, right? So वो जो gap है, उसको how do you bridge as an artist when you perform? There's this term that I use. It's called FLCM. Okay. I can't really say the word. You can. It's called create magic. मैं डाल दूंगा कैप्शन में, देखिए. So I always feel कि situation scenes कैसे भी हो, आप convince हो रहे हो, नहीं convince हो रहे हो, you have to create magic on screen. And how you create magic on screen, अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो. बहुत सारे कितने सारे शोज उसमें लॉजिक नहीं होता, पर अगर आप उस एक्टर को देखोगे तो वो या तो खुद इतना कन्विंस्ड है कि वो आपको कन्विंस कर लेगा, या तो उसको खुद ही लग रहा है कि शिट यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप नहीं होगे कन्विंस. तो मेरा बस यही है कि मैं कुछ भी करूंगी, मैं इतनी कन्विक्शन से करूंगी कि आपको लगेगा कि हाँ यार ये कितना कूल है. सो आई ऑलवेज ट्राई, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग अ सुपरनैचुरल शो नाउ, बट कभी कभी सीन्स भी आते हैं जब मैं बोलती हूँ कि यार no, but if I love him, then how will I say this to him? No, but if my mother is saying this, तो मैं अपने पापा को ये कैसे बोलूँगी? It's all about creating magic, and creating magic on screen. Not a lot of people can do it. So if you can do it. She's a magician. You don't have to have any doubt. फटाफट जाके बागिन देखना जब से चालू होता है. Please देखना. But मुझे बताओ, you spoke about the fact that it takes a lot of conviction to do anything, right? What I really like about you, and I don't think I've told you that in the past, but I don't think you really take that pressure of अरे यार हर वक्त दिखना चाहिए. I need to be seen always. हर दिन मुझे स्पॉटेड होना चाहिए, हर दिन मुझे ये होना चाहिए. यू डू नॉट टेक दैट प्रेशर. आप बागिन का ट्रेलर ही देख लो, बागिन की ट्रेलर में 2 बार हूं मैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग. ये जो चीज होता है ना, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन अ पर्सन, राइट?
you know कि अगर मैंने ये शो खत्म किया, say for example अनुपमा खत्म किया, whatever, even if I do not get seen for a while, it's fine, my fans they love me for what I bring to the table. कोई जल्दबाजी नहीं है. That comes from a sense of security. ये जो security है, you think you have developed this over the time with experience, and what is the biggest reason that you credit to the security that you have? Actually, this has been with me since day one. I remember when I entered the industry, I was doing the show called Kali Ek Punar Avatar for Star, where I was playing a sister's role. I was playing a sister's role, and within 2 months, my brother dies, and they told me कि अब तुम हीरोइन हो शो की. तो तभी भी मैं उतने ही शिद्दत से काम करती थी जब मैं बहन थी, और जब मैं हीरोइन बनी मैं तभी भी उतनी ही शिद्दत से काम करती थी. मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, क्योंकि बहन का रोल भी मैंने ऐसे ही किया जैसे मैं ही हीरोइन हूँ. सो इट्स विथ मी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि बड़ा या छोटा कुछ नहीं होता. अगर आपको कुछ दिया जाता है तो वो आपको अपना 100% डालना है उसमें. लाइक इवन माय मॉम टेल्स मी, लाइक माय मॉम वाज टेलिंग मी इन द मॉर्निंग कि यार द बार्गेन प्रोमो इज वेरी नाइस, बट यू आर द बार्गेन. तुम्हारे सिर्फ 2 ही शॉट है. मैं बोला हाउ डज इट मैटर? How does it matter? Very rare quality. Yeah, how does it matter? मतलब आपके कैरेक्टर से पहले स्टोरी आती है. जब स्टोरी लोगों को पसंद आएगी तभी तो आपका किरदार पसंद करेंगे ना. स्टोरी में ही दम नहीं होगा, फिर आपने किरदार में कितना भी किल किया हो कोई देखेगा ही नहीं. How does it? So I've always been very secured that way. I've never been an insecure actor. Thank God I have never. Touch wood. Yeah. तुम्हारे वो इसको भी touch wood कर दो. मुझे बताओ, देखो बागिन नाम is very interesting. Of course there are conversations around Nagin as well, but what I am 100% sure of is that you will bring your own element to it. As far as Nagin is concerned, I would say my favorite Nagin on screen has been, say, Tejasvi Prakash. I love the way she has whatever done. You have seen her work in Nagin? I've not really seen Nagin, but of course, Teju and me are friends. So I have seen whenever she posts something on Instagram. So how do you think this project, ये सवाल बनता है कि how do you think this will be different from Nagin, and what are the similarities that you think will be there? So ना मेरा, like I was telling some people also that मेरा सिर्फ एक काम है. My job is to give my 100% in whatever thing that I have accepted. अब मैंने कर लिया एक्सेप्ट बार्गेन की, ठीक है मैं बार्गेन करूंगी. मैंने कन्विक्शन के साथ बहुत मेहनत करके राउंड द क्लॉक काम करके अपना काम कर लिया. अब शो आने वाला है, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती. उसके बाद अगर मुझे ऑडियंस बोलेगी, अगर वो मुझे कंपेयर करेगी नागिन के साथ, या तो ऑडियंस बोलेगी कि यार शी सेंट लाइक मेड अनदर बेंचमार्क ऑफ हर ओन, नाउ आई एम बार्गेन, तो वो सब मैंने ऑडियंस पे छोड़ दिया. आप जो चाहो वो. That's exactly what I'm saying कि जब पहली बार नागिन आया था, nobody knew it's going to be such a huge thing. You never know, she might just set the benchmark for a bargain franchise and a bargain thing as well, like a proper theme. तथास्तु, exactly, that's what you can say. मुझे बताओ कि हर एक इंसान का, हर एक आर्टिस्ट का, when you talk about breaks वगैरह etc, it's a very dicey field, right? Our entertainment industry, कभी-कभी जब break वाले phases रहते etc, it's very easy to perhaps get into certain zones of self doubt वगैरह. हालांकि you're very secured as a person, self doubt कि यार अगला क्या करूँ, what can be more impactful etc. वो सब situations से how do you actually battle and how do you come out of those situations? तो of course I am also a human being. जब कोई शो खत्म होता है तब मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या करूंगी मैं, अब तो मुझे कुछ नया करना है. पर मैं उस पे इतना नहीं घुस जाती कि वो मेरी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करे. लाइक ऑफ कोर्स आई हैव माय फैमिली आल्सो विद मी, हु इज कांस्टेंटली देयर विद मी. फिर मुझे लगता है कि भगवान ने मेरे को ये 6-7 महीने का ब्रेक दिया है ताकि मेरे को बहुत ही आराम मिल जाए और मैं अपने आप पे काम कर सकूं, ताकि जब दूसरा प्रोजेक्ट आएगा मेरे पास तो मेरे पे I'll be like all out, and I'll be very ready, and I'll have a lot of energy, and I'll be back with a bang. So I'm okay with that break that I get in the between where ऐसा नहीं है कि मेरे को I have decided to take a break. No, nobody does that. It's because maybe you're not getting the work that you want, or maybe you're not getting work at all, which is okay. That is God's indication to you that listen, something great is coming. Just take a chill pill. तू रेस्ट कर, अभी एनर्जी इकट्ठे कर, क्योंकि अभी जो मैं तुमको देने वाला हूँ ना उसके लिए बहुत एनर्जी लगेगी. Hence I've given you this 1 year break. So work on yourself. क्या बात है. इसीलिए बागिन बनी है, because टाइग्रेस बनने के लिए on screen या off screen you need a lot of energy, zeal, enthusiasm.
मेरा भी थोड़ा एनर्जी मैं सोच रहा हूँ पास ऑन कर दूं. I think that might be better. But thank you so much, Baba. Thank It's been a pleasure you. always, and I genuinely feel that ये बागिन जो है एक नया बेंचमार्क सेट करे. अलग-अलग साल में अलग-अलग बागिन ऐसे आते ही रहे. And always she must be remembered as the first bargain. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. That's a wrap on the Sunny G Show by Rohit Consulting. This is your host Shubhajit. This is Aneri over here with me. We'll see you again with another very interesting episode very soon. अतरंगी में जाके देखो बागिन जब से आएगा. कब से आएगा बता दो. 8th February. 8 फरवरी के बाद से अतरंगी खोलोगे तो सिर्फ बाघी नहीं देखना, उसके अलावा कुछ नहीं देखना. अनेरी को देखना है. डीएम्स बीएम्स भेजो, वो 100% रिप्लाई करेंगे. मैंने बोल तो दिया, अभी देखेंगे बाद में. थैंक यू सो मच गाइस. विल सी यू वेरी सून.